Welcome to our class Deep Insights. So today we are discussing about +3 second semester major 1.4 जोटा कि होची एजुकेशन ऑनर्स यूनिट 1 आमे वर्तमान डिस्कशन करिवा। तो एट फर्स्ट बीट रे कोन आछी मीनिंग ऑफ टीचिंग। तो वर्तमान आमे देखिबा मीनिंग ऑफ टीचिंग। सो मीनिंग ऑफ टीचिंग, teaching is a communication between two or more persons, and in the process of interaction they influence each other by their ideas. So teaching is a communication. Teaching is a communication between two or more persons, जोटा कि दुई या अधिक लोकों मध्य रे communication होची जोगाजोग स्थापन करिथाय हला एवं and in the process of interaction they influence each other by their ideas. सेमानंकर आइडिया द्वारा सेमाने परस्पर को प्रभावित करी थांती। तो सेकंड पॉइंट कौन कहला, in the teaching process the learner, the teacher, curriculum and other are organized in a systematic way to achieve some goals. तले किछि लक्ष्य साधन करिवा पई लर्नर आउ टीचर आउ करिकुलम गोटे सिस्टमैटिक मैनर रे थांती। The definition of teaching, Rayburn. According to Rayburn, teaching is a relationship which gives the child to develop all his powers. Then Morrison. According to Morrison, teaching is an intimate contact between a more matured personality and a less matured one, which is designed to further the education of the learner. Then, according to Green, teaching is the task of a teacher which is performed for the development of a child. According to Gage, teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. Then Clark. Teaching refers to activities that are designed and performed to produce change in student behavior. Student मानंग behavior change करता है गला से कथा क्लार्क। तो relationship between teaching and learning, तले teaching और learning मध्य रे संपर्क कौन अछि हम टिके देखिबा। The main purpose of teaching is to facilitate learning. Teaching activities generate new learning experiences. Therefore, teacher establishes relationship between his teaching activities to students' learning situations. For effective teaching, it is essential to know the relationship between teaching and learning. That is the main purpose of teaching is to facilitate learning. That is teaching होउची कोन शिक्षादान, learning होउची शिक्षण हला। तो उभय किपरि भाबे संपर्कित हम ताको देखिबा वर्तमान। तो टीचिंग एक्टिविटीज जनरेट न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तले टीचिंग शिक्षादान कार्यकलाप न्यू लर्निंग नूतन शिक्षण पई दायी। Therefore, teacher establishes relationship between teaching activities to student learning situation. ताले टीचिंग होची गोटे एमतिया कांसेप्ट जोटा कि तार मुख्य भूमिका ग्रहण करथांती टीचर बा शिक्षक हला। आ स्टूडेंट होची शिक्षी थाए, तो सेति लागि स्टूडेंट होची लर्निंग सिचुएशन सहित रहिता है। तो मोर इफेक्टिव टीचिंग इज it is essential to know relationship between teaching and learning. ताले मोर इफेक्टिव टीचिंग पई हमें रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग विषय रे जानिबा दरकार। तो वर्तमान हमें देखिबा रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग कैन बी मेड एफिशिएंट
by relating it to learning. ଯେତେବେଳେ teaching ଟା କେତେବେଳେ effective ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ learning ସହିତ relate ହେଇଥାଏ ହେଲା। The objectives of teaching can be identified in behavioral terms. ତାପରେ for effective teaching appropriate learning condition can be generated. ତାପରେ next point କଣ କହୁଛି for creating proper learning situation effective teaching aids can be selected. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ point ଟା କହିଲା କି for creating proper learning situation effective teaching aids, ତ teaching aids can be selected. ତାହେଲେ proper learning ପାଇଁ learning situation ପାଇଁ effective teaching aids ଆମର କଣ ଦରକାର ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ କୁ ଆମେ ଯିବା ଟିଚିଂ ଦବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଟିଚିଂ aids ମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦରକାର, ଚକ୍ ଦରକାର, ଡଷ୍ଟର ଦରକାର ହେଲା, ବୁକ୍ ଦରକାର, ଏ ସବୁ TLM କୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ aids ବୋଲିକା କହିଥାଉ। ତ the knowledge of teaching learning relationship will be helpful for teacher educator to produce effective teachers. ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ର ରିଲେସନସିପ ଯୋଉ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା ଏଟା କାହା ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ହେବେ ମାନେ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ହେବେ ହେଲା କି ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପକେଇବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବ। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ହେଲା। ତାପରେ ମିନିଂ ଅଫ ଲର୍ନିଂ Learning is an acquired behavior as a result of interaction with the environment. Changes in behavior due to practice and experience which are relatively permanent are learning. तो बर्तमान आमे टीचिंग रो कांसेप्ट जानि गले बर्तमान आमे लर्निंग रो कांसेप्ट जानिबा तापर रिलेशनशिप तो जानि रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग तो जानि गले ହେଲା। तो बर्तमान मीनिंग ऑफ लर्निंग टिके देखिदबा। तो लर्निंग इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर जितेबाला व्यवहार रे परिवर्तन होइता ताकू ही आमे लर्निंग बा शिक्षण बोलिका कहिताउ हला। इंटरैक्शन विथ द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन विथ द एनवायरनमेंट आ परिवेश रे मध्ये तार प्रभाव पड़ी थाए। तापरे चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस बारंबार प्रैक्टिस कहले अभ्यास द्वारा ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବହାରରେ जोड़ा कि रिलेटिवली परमानेंट जोड़ा कि स्थायी परिवर्तन होता है ताकू ही कहते लर्निंग। तो ये गला मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग टिके देखिबा। तो मॉर्गन एंड किंग अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग इन 1978 चलो सी कौन डेफिनेशन देला लर्निंग ऊपर लर्निंग आज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर which occurs as a result of practice and experience से भी सही कथा कहले जोड़ा कि अभ्यास और अभिज्ञतार निरवच्छिन्न पुनर्गठन होची शिक्षण हला। तो बिहेवियर रे परमानेंट चेंज होची शिक्षण हला से कथा तापर देन होची अकॉर्डिंग टू मून केते बेले देथिले 1955 रे हला। तो अकॉर्डिंग टू मून लर्निंग इज मोर और लेस परमानेंट incremental modification of behavior which results from a activity special training or observation। ताले activity होची कार्यकलाप special training होची जो ट्रेनिंग हमको दिया जाए बा ऑब्जर्वेशन होची कोन जे पर्यवेक्षण माध्यम रे जहा रिलेटिवली परमानेंट होता है हला आउ ताकू ही कहंती शिक्षण। ताले किम्बल का मतरे किम्बल अकॉर्डिंग टू किम्बल learning as a relatively permanent changes in behavior as a result of practice and trials। तो बारंबार चेष्टा करिबा बा अभ्यास फल रे जो परिवर्तन होइता ताकू ही कहंती लर्निंग बा शिक्षण बोलिका। तो क्रो एंड क्रो 1973 रे देइथिले डेफिनेशन गोटे कोन देइथिले लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड अटेम्प्ट्स टू एडजस्ट टू न्यू situation it enables things to satisfy interest to attain goals हला। तो आमे आज कोन पढिले जे at first we know that what is teaching हला and meaning of teaching definition of teaching हला
तापर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, तापर मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एतिकी पढ़िले। तो आज एतिकी थिला। थैंक यू।